अच्छा, PHP is another scripting language. So already you know one scripting language, that is JavaScript. मैं HTML रे JavaScript टा पढ़िଥିଲେ, ସେମିତି PHP होचे ଆଉ ଗୋଟେ scripting language. It stands for Hypertext Preprocessor. Okay, तो PHP टा H ରୁ start होचे, Hypertext Preprocessor. PHP is an interpreted language, that is there is no need for compilation. एटी compilation ପାଇଁ କିଛି step ଦରକାର ନାହିଁ. It is faster than the other scripting language, for example, ASP and JSP. PHP is a server-side scripting language which is used to manage dynamic content of the website. Website रो dynamic content, dynamic content माने जोटा हमें कहि परिबा जेमते हमें लॉगिन करूचे आईडी पासवर्ड दउचे जो वेब पेजेस ता से इंटरेक्शन करिवो कहा सहित यूजर सहित ताको कहि जीव डायनामिक वेब पेज हम वीडियो ऑन करे तो केना दी वीडियो ऑन करे. Okay, so PHP is a object oriented language. It is a open source scripting language. It is a simple and easy to learn. अच्छा, open source माने कोन जोटा हमरा फ्रीली अवेलेबल रहिबो ताको कहबा हमें open source. ओके, तार कोनोसी कॉस्ट रहिबोनी. एंड PHP टाको यूज करबा को हेले हमको HTML दरकार पड़े. and it is a server side scripting language. अर्थ होची PHP को जदि हमको रन करिवा हमको एटलीस्ट गोटे सर्वर दरकार. इट इज a server side scripting language. आउ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कोन अछि? Java is a server side scripting language, and ASP is a server side scripting language. Similar way, PHP is also a server side scripting language. To run the application, we require at least one server. It can embedded into the HTML. It is an object-oriented language. It is an open source scripting language. It is a simple and easy to learn. It is simple and easy to learn. Okay, so why we use PHP? The PHP is a server-side language which is designed the dynamic web application with the MySQL database. So when we talking about PHP, then MySQL database is inbuilt with it. In the Java hele Java or Oracle, Java re hame use करते Derby database. The similar way when you talking about PHP, then it is embedded with, or it is suggested that you have to use a MySQL. It handles the dynamic content, database, as well as the session tracking for the website. You can create a session in PHP. Session is what? आमे इतरे login करूचे. We're providing our ID and password. तो सी हमको allow करूची next page को जीवा पाए. अच्छा, मु होम पेज को पढ़ेल. मु एबे गोटे registration पेज को जीवी. So it is again not allowing, or it is not asking me that you have to again give the ID password. Once I pass the ID and password, that means that ID and password is valid throughout the web pages. माने से ID password टा till you get log out. हाँ, जे पर्यंत हमें लॉग आउट न करिजे से पर्यंत तार आईडी पासवर्ड टा सेम आईडी पासवर्ड टा मल्टीपल वेब पेजेस रे से रिटर्न करिवो. अगेन आ गोटे एग्जांपल दउची सेशन रो. सपोज हमें वेबसाइट रे जेतरा हमें डेटा दउचे, that data is transferred from one page to the another page. गोटे फर्स्ट पेज और सेकंड पेज गला. If I want to transfer the data from the first page to fifth page, first page to the last page, that is not possible.
suppose I have the 5 question, online question, so I give a answer 1, first page रे answer देली, submit मानले second page को आसी गला मार्क टा, second page रे question अछि ताको submit मानली third page को आसीला, second page डाटा टा third page को आसीला, किंतु first page डाटा टा third page को आसीबोनी, यदि first page डाटा टा third page को आसुनी, ताले ultimately जब मु last page को visit करूची, ताले से fourth और fifth रो answer टा evaluate करिवो, ए तीनटा रो answer पाइबोनी, ताले हमें answer सब ठीक देथिले भी, दीटा क्वेश्चन आंसर हम इवैल्यूएट हो सेति भाई हमें ए जो इंफॉर्मेशन बा जो ए जो डेटा गुडा को रखिले ताको हमें गोटे पर्टिकुलर कंटेंट बा पर्टिकुलर मेमोरी रे हमें स्टोर करिवा जोटा कि थ्रू आउट द वेब एप्लीकेशन रे एटा हमर एक्सेस हे परिबो so it can access the cookies variable, also set the cookies. Session is what? It stores the information in the server. Cookies is a piece of information which is store the information on the client. Session server store karibo, cookies client store karibo. The PHP supports several protocols such as HTTP, POP3, SNMP, LDAP, IMAP, and many more. So using PHP, you can control the user to access some pages of the website. So you are giving a authenticity. Every user cannot access all the pages. So you provide the restriction over there. As PHP, it is easy to install and set up. This is the main reason why PHP is the best language to learn. And in the PHP, you can handle the HTML form, such as collect the data from the user using form, save it into the database, and return the useful information to the user. Okay, so that is called as the PHP. What are the features are available in PHP? One is it is open source. Okay, open source, performance wise it is better. The performance ta kon asibo na PHP script execute much faster than those scripts which are written in other language such as JSP, ASP and PHP. JSP and ASP. तो PHP आमे जितने सबु सारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कले भी PHP रो जो इंफॉर्मेशन अछि एटा इजीली आउ बहुत फास्टर वे रे हमर परफॉर्मेंस ता दबो इट इज ओपन सोर्स PHP source code and software are freely available on the web page that already I discussed. आदरे कौन सी पैसा दबा को पड़िबो नहीं. Familiarity with the syntax. It has easily understandable syntax. Programmer can comfortable with coding with it. It is embedded. Embedded means PHP टा में HTML भीतर ही यूज करि परिबो. Platform independent. PHP is available for Windows, Mac, Linux, Unix operating system. A PHP application developed in one way can be executed in other ways also. गोटे वेस रे से डेवलप हबो आ अलगा वेस रे ऑपरेटिंग सिस्टम रे से रन हे परिबो.
तेणु आपको कहवा हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मीन्स your application is developed in one platform and it run in other platform. Database support. PHP support all the leading database such as MySQL, SQLite, which is a lightweight database, and open database connectivity, open source database. Okay, those are the freely available. So you can connect PHP program with MySQL, SQLite, and ODBC. Next concept is what? Error reporting. It has predefined error constant to generate error notice and warning. In Java, we are using try and catch for handling the exception. But here it contains the predefined error reporting part through which we can easily handle the error, like e.error, e-warning, e-strict, e-pause, ଏସବୁ ରହିବ. Loosely typed language. PHP allow us to use the variable without declaring it data type. Okay, JavaScript रे scripting language रे data type रो कौनसी दरकार न था. तो एठी भी सेमती हमें without any data type we can store the value. Web server support. PHP is compatible with almost all local server used today. हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टा को रन करिया पई मु कहले हमको गोटे सर्वर दरकार पड़े. So it is used to handle all the server like Apache, Netscape and Microsoft. Just a minute. तापर देखो the PHP is a secure language to develop the website. It consists of multiple layers of security to prevent the threats and malicious program. कौन सी जदि malicious program हम प्रोग्राम को हैम्पर करबा को चाहूची ताले एठे हमें ताको डिलीट करि परिबा. Control. Different programming language require a long script or code, whereas PHP can do some work in a few lines of code. It has maximum control over the website, like you make changes easily whenever you want. A helpful PHP community. It has a large community of developers who regularly update the document.
अपडेट हेले कौन हम जदि आम कौन प्रोग्राम लिखुचे जिते से सॉफ्टवेयर यूज करुचे बेले बेले तदे बग्स आसे एरर आसे डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द यूजर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन से बग्स गुड़ाक एमाने ऑनलाइन सब रही था एमाने सॉल्व करते बुझीगला तो PHP code is written in angular bracket question mark PHP then angular bracket this one क्वेश्चन मार्क ना सर question mark ए थ्रू रे रन होबो angular bracket question mark PHP then angular bracket जो question mark then angular bracket ends ठीक है तो PHP script can be placed anywhere in the document. A PHP script start with the PHP and ends with this angular bracket. The angular bracket रे end होगा बट आईडी टा ओपन होबनी Okay, so first I run the program. ମୁଁ କାଲି ଏଟା ଦେଖେଇବି କେମିତି ରନ୍ ହେଉଛି ପରଦିନ ଏଟା ଏଠି ଲେଖିବା PHP to display anything we are using echo. ओके ଏଠି echo ଲେଖିବା अच्छा इनपुट रे କଣ କହିଲ इनपुट रे ଶୁଭୁନି इनपुट इनपुट रे इनपुट बेले इनपुट बेले इनपुट रे हमें फॉर्म दबा ना फॉर्म अच्छा ओके देखिए बुझिले माने इनपुट जोर तो हमें पचारुछ इनपुट हमें कोड दबा फॉर्म में दबा ना एठी इनपुट पई किछि नै जेमति कि हमें कोर प्रोग्रामिंग रे अलगा रखुचे किंतु एठी इनपुट पई किछि नै एठी हमें जहां भी यूज करबा कोन ना डिस्प्ले करबा इको स्टेटमेंट रे नै कि डिस्प्ले करबा ना ना इको स्टेटमेंट धर मु लिखिली कि व्हाट्स योर एज तापर इनपुट देली मु जोटा एज टा सेटा खाली डिस्प्ले हो तो ए तीनटा सेंटेंस खाली लिखी से इनपुट ता जोर ता कहउछ सेटा इनपुट ता HTML फॉर्म रे नवा बिकॉज़ इट इज एम्बेडेड ओहो विथ HTML सेटा डायरेक्टली किछ नवा बुझौछ अब जे डायरेक्ट PHP ओके लग नबो तदे सब इनिशियलाइजेशन करके नवा पड़ियो हम्म
सेटा रन होनी कि रन हला पर रन करेनी कि सॉरी प्रोग्राम फिनिश हला हां हां तापर हमर रहला PHP variable. So variable is a memory location which is used to store the value. Value को store करिया पे हमें variable use करिवा. The PHP variable is declared with a dollar sign followed by any variable name. The dollar sign हमें लिखिवा followed by any variable name. Some important point to know about variable is what? Yes, PHP is a loosely typed language. So we do not need to declare the data type of the variable. A loosely typed language, तेणु data type ता हमर एठी define करिवा दरकार नहीं. हमें directly variable name ता pass करिवा सेठी value store करिवा. So after declaring a variable, it can be reused throughout the code. Okay, so after declaring a variable, it can be reused throughout the code. हमें बार-बार ताको reuse करि परिवा. मोर requirement अछि मु value store कली then value retrieve कली. Okay, and for storing the value in a variable, as it is same to the in the other programming language like C, C++, Java. Okay, so that is dollar variable name is equals to value. Okay, so if PHP is a loosely typed language, then एठे हमर data type दरकार नहीं, directly हमें variable name pass करिवा, then हमें जो value चाहूचे store करिया पे से value एठे store कर दरवा. एटा हला for defining a variable. So बोले मन रखिबो the variable टा में define करिबा dollar sign use करिबा dollar. तो dollar is used for defining the variable. Then types of variable. As you know that it doesn't have any data type. Then what are the type of variable is there? Means what are the types of variable is present where you have to store the value? Okay. ता आदरे हमर अछि integer. Integer हेले which is used to store the whole number or numeric value. Double which is used to store the fractional value which is a little bit larger than the float. Boolean which is used to store the yes and no. And string is a sequence of character. More than one character जदि मते store करिवार अछि म string define करिवि. Then array is called as the named index. तमे जानथिबो array रे index number through रे हमें element टा को retrieve करिवा. Object in a class object concept, object plays the important role. It is working as the instance of class or part of the class. जंते कि गोटे घरे तमे जदि का को इनवाइट करिया को चाहूछो तो जणे लोक को कार्ड दिया होची तले 5-6 जण आसी जाउछन्ती. Object is just like that.
What is a instance of class? Okay, so next is resources. What is the work of resource? Now, resource are the special variable that hold the reference to resources of external PHP. Okay, so it call as, it is a special type of variable which hold the reference, or you can say it hold the address of another variable. आ गोटे वेरिएबल ला एड्रेस एटा रखिबो कोटा रिसोर्स बुझेला सागर आज्ञा आज्ञा हेलो तापरे हमें किसी जिनस डिस्प्ले करिया चाहू छे सर पूर्वर पूर्व स्लाइड टा टिके देखिले सेगुडा सब हां हां ठीक है सर बीआर न लिखिले यार कोन लाइन मर्ज हे जाय की हां ब्लाइंड ब्रेकिंग होबनी गोटे लाइन सब प्रिंट कर दो ना ना मुझे दीटा लाइन जो लिखा है जी सेमति प्रिंट होबनी पूरा सब गोटे लाइन रे जीवो हां अच्छा अच्छा एटा देखो एटा गोटे बीआरएम यूज करछु सर सेटी बीआर यूज होबन इन्वर्टेड कॉमा भीतर बीआर यूज हुए ना इन्वर्टेड कॉमा भीतर बीआर यूज हो सर कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक कर देथांते ठीक है राइट एरो तो देते सिलेक्ट हो जाता देखले PHP is fun सर ये बीआर सब प्रिंट करूची हां एठी प्रिंट कर जरूर एटा म आ गोटे आईडी रे म एटा भूल एटा पठे देथिलु म काली एटा को देखिए तो नेक्स्ट क्लास रे हैला एस2 माने हेडर 2 सेटा भूल रे देखिए देबी एटा हम देखिबा नेक्स्ट जो क्लास रे म नेटबिन आईडी करके देखिबी हैला
आज्ञा आज्ञा ओके एतिक थाउ काली आम डेटा साइंस टा पढ़ियो ओके पढ़ आज्ञा काली केतेबेले काली 8टा 8टा बेले टाइम देइछि अच्छा हो ठीक अछि